Hello all, a very good evening to you. Welcome to day 17th of finishing your array. Let's wait for a couple of minutes until everyone joins. I think Samkit is there. Hello Samkit. Oh my god, you are before over here on the stream before me too. Great. That is something which is required from all of you, but somehow not everyone joins on the time. I'm waiting. Can wait. Let's wait. A very good evening, guys. How is your week going, guys? And how you guys are doing these days? How about DSA? Anyone really solving problems, or just they are attending the lectures to know the concepts? Attending lectures for knowing the concept won't work. If you are just learning something and not implementing, it won't help you in the long run. You will be remembering for a couple of days, and post like 7 to 8 days those concepts will be null, just like me. So make sure that you attempt. So yes, good evening Mahima. I hope we are about 3 to 4 people, so that we can start from here, boys. And our agenda for the day is solving only one question for today, and one question for today, and we'll have one chit chat. We'll have chit chat on Meet for 10 to 15 minutes. I will just have everyone's update that what they are doing right now in DSA, and we'll done with arrays, and on Saturday or Sunday I'll be starting 2D metrics, and from that day we'll cover for 7 to 8 lectures on 2D metrics, and then we'll be done. Post that I think that we'll be having some kind of Diwali vacations or something like that. Arrays will be finished. You will be given like 10 to 12 questions on holiday homework for your arrays while you are going to your home for Deepavali, Chhath Puja and all. So make sure before 30th of October, like 30th of October, like I'll write whatever I am saying. So 30th of October you will have only arrays. So make sure you have solved at least 50 questions on array apart from my topics or my questions, and make sure you have a short notes of 2 to 3 pages on arrays, and up 1 page on 2D metrics, so that you can have a good grasp over the concepts. You can revise well in the meantime. If you have some kind of interviews, you can revise well. To begin with, I have only one question for the day. I'm again like I didn't caught cold, but somehow I'm having runny nose today. My cough is gone, but runny nose is still there with me. I'm struggling with my health these days. I don't know, but yet let's make the most of it until I'm teaching. So 1658 the question for the day is, and that is the question states minimum
I'll keep the camera off for a couple of seconds because I'm having runny nose, so I don't feel like I should grab my towel to clean my nose every time in front of camera. I am feeling embarrassed, so that's why I'll keeping my camera closed for the day. Minimum operation to reduce x to 0. So guys, I was solving this problem in the exam. This is one of the very good problem. Like if at my experience I am getting tricked by these kind of questions, then I also need a lot of practice, and you also guys need a lot of patience to understand these kind of concepts, because I have learned this and I'll teach you that what I caught from here, what kind of short notes I'll prepare from here. Okay, so question states, if you are given an array nums and 1, 1, 4, 2, 3 and you are given an x, that x states that this is x. So the question states you can either take something from left, or you can take from left, or you can take from left and right both to make x 0. You won't get the question just with my explanation. Let me, so you can remove either 3, or you can remove either 1, or 1 and 3 together, like in some manner, and you just need to make sure the sum of these numbers gives you x, that x is 5. So if you carefully observe, they are saying you can only remove, I'll write, leftmost or rightmost element. So this is the only problem which we are going to study today, and post this problem we'll be having a chit chat session, and post that session we'll close array topics. Rest of the questions which are asked in the examination are somehow covered in the exam, and like somehow covered before in all the 16 lectures. You can revise from there, and make sure you create your own short notes so that you can revise. So if you carefully observe, this problem also I have taught, but somewhat in a different manner, which you need to analyze that okay, what things can be done. Okay, so they are saying either you can remove the leftmost element, or you can remove the rightmost element, or like every time you have a chance, either you can remove leftmost or rightmost. You just have to make sure that whatever elements you are removing, the sum should be equal to 5. Okay, so what a human brain could have, what a human brain can think of is like 1 and 3 is given, we have the sum as 5. I will get 5 minus 3, what is the maximum of both of it, like this 1 and this 3. So 5 minus 3 is 2. Now 1, 1, 4, 2, 3. Okay, correct? Yes or no? Yes. So this 3 is gone now. My rightmost pointer point over here, my leftmost pointer point over here. Now if you check which one is greater, like leave greater one, you can see that okay, if we can remove 2 from here, our x will be equals to 0, and this is what we need. And in 2 steps, like they are asking how many steps, that what number of steps you need, steps. So as soon as you move this right pointer from here to here, you covered one step. As soon as you moved your right pointer from here to here, in order to make this 2 as 0, just subtracting both of them, so you covered one more step, and likewise your steps count over 2 over here, and that is how you can say that okay, this x is equals to 0 in steps 2. So answer will be 2. So you have to give the minimum number of steps, like there are multiple, and it might be possible that over here, just I can give you one more example, that over here just assume that 1 1 1 2 4 2 3. If you have to carry like if you have to see, this is left, this is right, you can also subtract 1, this will give you 5 minus 4 is equals to 3, 5 minus 1 is equals to 4.
this will give you 3, this will give you 2, and this will give you 0. So how many steps you have covered? You have covered 4 steps, but question is asking minimum number of steps. So as soon as you read the term minimum, like how my brain got tricked, I will tell you. As soon as I read that, okay, they are asking for something minimum, so I thought of subtracting maximum value. Okay, maximum value of whatever value present on left or whatever value present on right. So if this is 5 and this is 6, so I thought of subtracting 6 so that I can get the minimum number of steps, because I want to make my sum 0 as soon as I can. Clear? Clear? But now let's go with these two examples. You might have thought that okay, we can either move in left direction or you can move in right direction, but this is not the case, my dear friends. So observe this example, guys. This is example says 3 2 20 1 1 3 and x over here is 10. So look how this algorithm works and how I got tricked. So these both are 3, either you move left or you move right, step is 0. Now you moved right just in case, so now it is 7, step is 1, right pointing here, right pointer is at this index. Now it is 1 is greater than 3, 3 is greater than 1, so I am moving the left pointer, and now my left pointer moves like shrinks to right, and it says again the sum becomes 4. Now over here in the left the sum is 2, so step now becomes 2, and as soon as you see that that you have subtracted 2, you need to subtract 2 from here, so this will give you 2. You can move your left pointer here and right pointer is still at here. You can't subtract 20 from 2, so in order to make this 0, you can't subtract 20, right? You just need to subtract these 2 ones now. So you will be having at the end of the day, you will be having these 3 steps and these 2 steps, step as 5, and which is also the correct answer in our case. But this is not how the algorithm will work. I thought of this problem, and how many of you thinks that this algorithm will work fine for this question? How many of you will think? How many of you will vote that okay, this algorithm will work for this question? I want everyone to respond. Like 5 people are watching streams. How many of you thinks that this algorithm will work for this question? Like you got the question yes or no first, and how many of you think that okay, this algorithm will work? Come on guys, respond. Guys, respond please. At least give your views on it, guys.
Harshit, can you let me know that okay, what else you didn't got? Mahima, are you there? Like, guys, respond, na? Like, I'm not getting your responses, guys. How come this will work? So, तो थोड़ा दिमाग लगाओ ना कि कैसे चलेगा. महिमा, आर यू देयर? लाइक हु एल्स इज देयर? लाइक 6 पीपल आर वॉचिंग. हु इज देयर? लाइक भाई रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं हमारे लोग यार. पता नहीं क्या हाथ दुख जाएगा, हाथ टूट जाएगा. आई एम नॉट गेटिंग द सेंस दैट दे हाउ कम दे डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड गाइस. समझ आ गया जो आपने बोला, बट वर्क करेगा या नहीं नो आइडिया. दैट्स फाइन, बट सोचो कि क्या वर्क कर सकता है. यही तो मैं चाहता हूं कि तुम अपना दिमाग लगाओ. थॉट सेम. और कौन लोग है भाई? 2 ही लोग का 3 ही लोग का रिस्पॉन्ड आ रहा है. बाकी 5 लोग कौन? बाकी 2 लोग कौन है जो एकदम बैठे हैं? वर्क तो कर सकता है. ओके चलो इस एग्जाम्पल पे देखते हैं. वर्क होना चाहिए. चलो देखते हैं इस एग्जाम्पल पे क्या ये वर्क होगा. वेट करो, वेट कर जस्ट 1 सेकेंड. सो इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व गाइस, हमारा एल्गो कहता है विच एवर इज द मैक्सिमम, catch this and remove it from your string and shrink the pointer. So our right pointer is at here, our left pointer is at here. So in the given case, which is maximum? 5 is maximum, so I am subtracting 5 and I am making a step as 1 and I am shrinking my left pointer and I am subtracting 5, that says 2. Now the pointer says that okay, the x just needs 2. So you will say okay, if this right is like, you will write a algo saying that okay, if any number left or right is greater than required x, so we will subtract the remaining of it. So I am subtracting remaining, that is x is equals to 2 minus 1, that is 1. So over here this will shrink down over here. Okay, and now comes the logic. So now L is pointing to, a step is equals to 2, L is pointing to 2 and R is pointing to 1 and now x remains 1 and I can't move anywhere. So is it saying, is my algorithm saying, so is this algorithm saying that okay, you are not able to get the sum, you are not able to make the x 0? Okay, but over here we are becoming greedy. How is greedy? How we can say that okay, we are greedy? I am just explaining. So what greedy approach says na, choose best whatever you can choose as of now, don't think of future. Like
अगर मेरे सामने यहाँ पे 5 चीज़ें रखी हुई हैं, फ्यूचर का नहीं सोच करके मैं जो इसमें से 5 बेस्ट ऑप्शन से मैं चूज़ करता हूँ। जैसे मैं तुमको बोला कि भाई तुम्हारे पास में एक 2-3 प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। एक प्रोफाइल है टेस्टिंग जॉब है जिसमें तुमको 30 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, ठीक है। एक प्रोफाइल है जहाँ पे तुमको ऑटोमेशन का काम करना है, जहाँ पे तुमको 25 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। और एक प्रोफाइल है जो डेवलपर का है, जहाँ पे तुमको 5,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। तुम क्या करोगे गाइस? तुम लोग क्या करोगे ये बताओ मुझे। व्हाट यू विल डू, विच ऑफर यू विल बी एक्सेप्टिंग, जस्ट लेट मी नो द ऑफर। 30 वाला एक्सेप्ट करोगे, 25 वाला एक्सेप्ट करोगे, या फिर ये 15,000 5,000 रुपए वाली सैलरी एक्सेप्ट करोगे? 30 लाख, 25 लाख और 5,000 रुपए की सैलरी, इतना डिफरेंस है। बताओ कौन सा सैलरी एक्सेप्ट करोगे तुम लोग? कौन सा सैलरी एक्सेप्ट करोगे? कॉमन वॉइस। जब तक तुम लोग एक्सेप्ट करते हो, मैं ये एग्जांपल तुम लोगों को क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे 4, 2, 6 और 1, 7 ये सम बन रहा था, तो इसका आंसर -1 नहीं होगा। बट आवर एल्गो से ये -1 आ रहा था। इट वॉज सेइंग वी कांट मेक। हाँ, महिमा 5,000 रुपए की सैलरी एक्सेप्ट कर रही है गाइस। और कौन क्या एक्सेप्ट कर रहा है? कोई बता ही नहीं रहा है यार, कोई पैसा एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है। ठीक है भाई, भगवान सब तुम लोग का पैसा हमको दे, ठीक है। हर्षित भाई 5,000 रुपए की सैलरी एक्सेप्ट कर रहा, लग रहा है पैसा देख करके समकित का, पार्थ का और बाकी लोगों का मन इसे मचल सा गया है, बिगड़ सा गया है मन, है गाइस? ऐसा नहीं है। अगर तुम लोग को 5,000 रुपये में डेवलपर का रोल मिल रहा है, अरे बाप रे बाप, पार्थ कह रहा है 30 LP लेंगे, बाढ़ में गया डेवलपर टेस्टर, साला जो होगा देखा जाएगा। है पार्थ? तो पार्थ भाई ग्रीडी नहीं होना है। अगर आप ग्रीडी होइएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। कल को AI आएगा और पेल देगा, ठीक है। जो टेस्टर लोग हैं उनको सबसे पहले AI पेलेगा, ठीक है। डेवलपर लोग को थोड़ा लेट पेलेगा, लेकिन टेस्टर लोग को जल्दी पेलेगा, ठीक है। तो पार्थ भाई लालची नहीं बनना है, 5,000 रुपये लेके ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके जब सीख जाइएगा तो फ्यूचर में आप फिर बाकी सर से खर्चा करा लेंगे। सर से क्या खर्चा कराएंगे? सर खुद खर्चा करने के योग्य नहीं है, ठीक है। तो क्या अगर हम लोग मैक्सिमम हर बार लेते या फिर रेंज का एलिमेंट लेते तो क्या हम लोग कभी इस तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि हम ग्रीडी बन रहे थे। और ग्रीडी अप्रोच होता है, ग्रीडी अप्रोच में जो बेस्ट दिखता है उसको कर लो, जो बेस्ट दिखता है उसको ले लो, जो बेस्ट दिखता है उसको ले लो। तो जो बेस्ट दिखता है उसको नहीं लेना है हर बार, ठीक है। दिख रहा होगा कि भैया अगर हम यहां से गए तो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन आप यहां से गए ना तो क्या पता आगे उसी में जाम हो। लंबे वाले रास्ते जाइए, सब कोई शॉर्टकट के चक्कर में जाम में फंस जा रहा है, आप लंबे वाला जाइए, जल्दी पहुंच जाइएगा। तो ग्रीडी नहीं बनना है। क्या करना है गाइस? अच्छा, तो अब इसको लेके क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1, 2 और 4 से मेरा सम 7 बन रहा है, बट अगर हम अपना अप्रोच जो अभी तक लिखे हैं वो अप्रोच यहाँ पे फेल कर जाएगा ना। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है मैं समझाए तो, और फिर विल हैव अ मीट एंड देन विल डिस्कस कि किसका DSA कहाँ पे पहुँचा है। देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 5 है, ठीक है। हमको चाहिए सम 7, ठीक है। ऐसा करते, एक ये सॉल्यूशन हमको ये सॉल्यूशन निकालना है। इसके पहले हमने जो 3 सॉल्यूशंस जो अपना लिखे हैं उन तीनों सॉल्यूशन को हम लोग फिट करने का चेक करेंगे। जो हम लोग अभी नया वाला अप्रोच सोच रहे हैं उसमें तो क्या उसमें हम लोग इसको फिट कर सकते हैं क्या? अगर गाइस हमारा x 5 है, ठीक है, हम लोग एक सिनेरियो सोचते हैं कि अगर हम पूरे का सम निकाल दें 1, 1, 2, 4, 6, 2, 8 एंड 3, 11 - 5, 6। सो अगर कोई हम सब एरे जो बीच में लाई कर रहा है, बीच में कहीं पे लाई कर रहा है और उसका सम 6 निकाल दे, मिनिमम लेंथ का सब एरे निकाले जिसका सम 6 हो, तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? क्योंकि 11 वाज अ सब अब सब एरे एंड x वाज रिक्वायर्ड, जो कि लेफ्ट और राइट से हम हटा रहे हैं। तो गाइस अगर हम लेफ्ट और राइट से कुछ भी हटा रहे हैं
तो उसका मतलब है कि हम बीच का नंबर ले रहे हैं, मतलब बीच का मतलब बीच कैन बी एनीथिंग, राइट। बीच कैन बी लाइक ये भी बीच हो सकता है ना, या ये भी बीच हो सकता है, या ये भी बीच हो सकता है, मतलब या तो लेफ्ट से नंबर हटाओ या तो राइट से हटाओ या दोनों साइड से हटाओ, तो बीच में कुछ भी आ सकता है ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अगर इसका पूरा का सम 11 है और हम कह रहे हैं कि भाई 5 जो है 5 ये मेरा x था, मतलब लेफ्ट या राइट से हमको सिर्फ 5 नंबर हटाना है, 5 का जो सम है वो हटाना है, तो कितना बचता है, 11 माइनस 5 इज गिवन है 6। अगर हम 6 मेरे पास बचता है जस्ट इन केस, तो 6 ही एक सब एरे जो बीच में कहीं लाई करना चाहिए। तो यू गाइस गॉट द जिस्ट कि अगर इस क्वेश्चन में भी तुम आओ, जैसे ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन था ना, रुको एक और क्वेश्चन क्या था, आई विल टेल यू। हाँ ये देखो एक और क्वेश्चन था कि भैया एक ये भी था ना हम लोग के पास में कि भैया एरे दिया हुआ है 3 2 20 1 1 3 और हमको x लेना था 10, है ना। तो 3 2 5 20 25 1 26 1 27 3 30, मेरा सम 30 था। और कह रहा है क्या कि भैया ये 30 लाने के लिए, ये 30 में से अगर हम 10 घटा दिए तो बोलता है कि कोई एक ऐसा सब एरे बताओ जिसका सम 20 है, ठीक है। अब मान के चलो हम तुमको एक और सिनारियो देते हैं, मान के चलो कि 3 सब एरे आ गया जिसका सम 20 है, ठीक है। 3 सब एरे है, एक का लेंथ है 2, एक का लेंथ है 3 और एक का लेंथ है 4। तो गाइज तुम लोग कौन सा सब एरे चूज करोगे ये बताओ मुझे पहले। चलो इस एग्जांपल को बाद में देखते हैं। अगर तुमको 3 सब एरे मिल गए जिसका सम 20 आ रहा है, जो कि हम 30 माइनस 10 किए, 10 इज आवर x, है ना, कि बीच का सब एरे हम निकाल पाए, तो यू आर गेटिंग 3 सब एरेस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, ठीक है। तो विच सब एरे यू विल बी चूजिंग टू मेक योर आंसर। विच वन, लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ 4, कौन सा सब एरे चूज करोगे गाइस, कम ऑन क्विक, एकदम क्विक रिस्पॉन्ड करना ये तुम लोग। विच सब एरे यू विल बी चूजिंग इन तीनों में से, लेंथ 2 लेंथ 3 और लेंथ 4, 3 सब एरे बनता है, तीनों का सम 20 आ रहा है। तो तुम इस क्वेश्चन जो मैंने तुमको अभी तक समझाया है उसके हिसाब से कौन सा सब एरे चूज करोगे फॉर योर आंसर गाइस, कम ऑन क्विकली रिस्पॉन्ड। महिमा तुमको तो समझ में आ गया था, बताओ क्या कौन सा सब एरे चूज करोगे तुम यहां पे। मान लो ये क्वेश्चन तुम भूल जाओ, अभी के लिए तुम ये क्वेश्चन भूल जाओ। विच सब एरे यू विल बी चूजिंग, ओके। Samkit is saying sub array of size 2, okay, रुको लिखते हैं आज Samkit with sub array of size 2, Mahima is sub array of size 4, Harshit भाई is sub array of size 2 and Parth is of sub array of size 2। तो गाइस यहाँ पे महिमा टॉप करती है गाइस, एज यूजुअल महिमा टॉपर है अपने क्लास की, बहुत ब्रिलियंट है, उसने सही जवाब दिया है। गाइस अगर तुमको 2 ही साइज के सब एरे में तुमको सम अगर 20 मिल जा रहा है तो इसका मतलब है कि तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कर रहे हो, है ना, मतलब तुम इतना एलिमेंट इधर से और इतना एलिमेंट इधर से निकाल रहे हो, है ना। मैं एक तुमको बात बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा था 1 और 19, है ना, तुम इन दोनों को चूज कर रहे हो। बट व्हाट इफ गाइज अगर तुमको 4 सब एरे मिल रहा है, इसका मतलब है कि तुम लेंथ से 4 एलिमेंट घटा रहे हो। मतलब मान लो इस एरे का लेंथ कितना था, 10 था, ठीक है, तो तुम्हारा सब एरे का साइज हो गया 2, तो तुमको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 8 रिड्यूस करना पड़ेगा। बट अगर किसी सब एरे का साइज 4 हुआ तो तुमको सिर्फ 6 रिड्यूस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही कहता है कि मिनिमम ऑपरेशन टू रिड्यूस, है ना। तो अगर मल्टीपल सब एरेज आ रहे हैं तो जिसका लेंथ बड़ा रहेगा, जिसका लेंथ मैक्सिमम रहेगा, वही हमको मिनिमम देगा बीच में। अच्छा तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया गाइस, तो क्वेश्चन तो समझ में आया होगा डेफिनेटली, नहीं आया तो बताओ मैं दोबारा समझाता हूं। और ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी कि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, प्रीफिक्स माइनस के अप्रोच, जिस अप्रोच से तुम किसी एक सब एरे का साइज सब एरे ऑफ सम के निकाल सकते हो, एक एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ये मैंने प्रीफिक्स माइनस के अप्रोच से पढ़ा दिया है, तो गो बैक टू प्रीवियस वीडियोस एंड लर्न इट दैट हाउ प्रीफिक्स माइनस के मेक्स द सब एरे ऑफ सम के।
ठीक है, चलो गाइस बताओ किसको कुछ क्वेश्चन समझ में आया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ट्रिक कर दिया था, बीच का पार्ट लेना था, दोनों साइड का पार्ट नहीं लेना था। समझ रहे हो, जहां पे हम श्योर नहीं है वहां पे हम घटा के निकाल सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे श्योर नहीं थे ना कि लेफ्ट वाला ले या फिर राइट वाला ले, मैं कन्फ्यूज था ग्रीडी अप्रोच लूँ कि ग्रीडी अप्रोच नहीं लूँ। क्यों ग्रीडी लेना है, बीच का ही निकाल देना भाई, इन दोनों का तो ऑटोमेटिकली तू घटा के निकाल सकता है ना। एक्स से तूने अगर पूरा सम माइनस एक्स कर दिया तो बीच का जो सम आ रहा होगा वो सम को तुम चेक कर लो कि सब एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बात खत्म। गाइस क्वेश्चन समझ में आया क्या? गाइस कम ऑन, क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोग को? अरे रिस्पॉन्ड करो रे लॉन्डो। सॉल्यूशन समझ में आया क्वेश्चन का, ये बताओ पहले, हाँ या ना? अरे हाँ ना बोल सकते हो ना, बताओ तो सही। यस, महिमा विथ यस, पार्थ विथ यस, सबकित विथ यस, हर्षित भाई आपको? ठीक है, तो फिर ठीक है, सबको समझ में आ गया तो मैं एक मीट का इनवाइट भेजता हूँ आप लोग को, उधर ज्वाइन किए, थोड़ा आप लोग से उधर गुफ्तगू कर लिया जाए क्या सीन। तब तक के लिए बाय।